Okay, dear. You're a software engineer, right? Software company owner, right? Yes. Okay. So how was the procedure? Not much pain? There is no pain. Okay. Thanks. So like around 2,000 grams, right? Yes. Okay. So yeah, you've been in touch with our doctors in case you have any pain and all, so you can take a painkiller. Right? Some swelling will come for 3rd to 5th day. They're going to put up a tape here. Then if some swelling comes, then you have to massage your forehead and or put cold ice packs and all. You have to send every 3rd day, pictures of the donor and the recipient to the doctors so they can follow it up. Perfect. And of course 4-5 hours are important after procedure because the local anesthesia takes that much time, to get out of the system. So that you have to tell. Okay, so this is just after the procedure. As you can say, hardly any traumatic, hardly any bleeding. Now they are going to put something at your donor so that post-operative a few white dots are avoided. Okay, and so that's called a special gel and a special collagen product and some special cells so that the mark is reduced. It cannot be 100% reduced, but the punch size is less, plus which allows the process of healing much better to avoid if you want to keep a shave which zero cut shave or 1 cut shave. So we should try to avoid those white dots. Okay. Perfect. So why did you choose this clinic? You have been going around a lot of places, right? So let us get a feedback. Yes, after I met you and then after the consultation with you, I think I was very confident to choose Anagen. Yeah, okay, fine. And how do you choose a good clinic? Can you tell others who want to know about it? The technique part is the instant part also, right? Yes. Just go to the reviews. Okay, I'm going to put my reviews as well. Okay, thank you so much. So for 3 things important here which we discussed before is instant hair transplant means punch it, don't take out the grafts, take out few and implant it, take out few and implant it. Yes. And then again repeat the same procedure after the lunch. So the graft is not outside the body for 15 to 30 minutes. It won't die, yes. Yeah, so that's a method. Then of course single hair follicles in the front, soft hair in the front, zigzag hairline. Then as you see the power of pen implanters. Hardly any trauma, right? Yes. So you can see the bleeding is not there, as if you can just straight away walk out. So the trauma is less, the survival will be more because the stress on the scalp will be less. So very few people are trained in pen implanters. So the pen implanter is the important thing. And then how to avoid or reduce post-FUE white dots is the next big thing we have to think. Okay, dear. So hope to have a great pictures after few months with your before and after pictures. So be in touch. Keep sending the pictures for follow-up to the doctor. Yeah, hi Zaid. तो आप एक अच्छी सी स्टोरी कैसा लग रहा है अभी? आप कितने महीने हो गए? मतलब करीब 8-9 महीने ना, जनवरी से देखो तो 8 महीने, राइट? 8 महीने हो गए, काफी अच्छा है ना अभी थोड़ा वो भी, प्लस इन बिटवीन जब तक ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा उसका भी आइडिया मैंने आपको दिया है ना। हेयर लाइन ठीक लग रहा है आपको? वेरी गुड। सो अभी आप कुछ एक्सपीरियंस बता रहे थे कि अभी तो हमारा टारगेट है आपका बिल्कुल ही बॉल्ड था, राइट? या सो व्हाट वी आर प्लानिंग इज कि अभी पीछे जो बच गया है क्राउन एरिया में टोटल 7-8 हज़ार वो ड्राफ्ट लगाएंगे ताकि अमेजिंग डेंसिटी आ जाए, प्लस साइड में हमें टचअप देना है। ओके, और थोड़ा सा इधर hairline, fading line at the temples, density increasing, and at least 5-degree angle over here. Look at the temporal points correction. Look at the temporal, front temporal at this angle. Okay. Then you can look on this side. The hairline, absolutely fine sentinel hairs. Then singles. Then clusters of singles. Then comes twos. Look at the angles. Look at the angles of the temple parts. Fading hairline. Fading line at the temples. So Sumit, सबसे पहले थैंक यू सो मच. यू आर अ वेल नोन सेलिब्रिटी इनटू द कोरियोग्राफी, लॉट ऑफ फिल्म्स आप करते हैं. तो कितने महीने हुए डियर? सर मेरे को 5 मंथ्स हुए. अच्छा, कितने ग्राफ्ट किए हैं? 3000 किए हैं. अभी तो काफ़ी अच्छे आ गए, राइट? 5 मंथ्स में अभी डबल हो जाएंगे. थोड़ा सा क्लोजअप, हाँ, और ऐसे हाथ को फेरना दोबारा, हाँ, आगे से, राइट, वेरी गुड, ठीक है ना? हाँ, राइट. अभी तो और भी आएंगे, जस्ट अ मैटर ऑफ अभी तो 5 मंथ्स ही हुए ना. हाँ, तो अभी कौन सी फिल्म करी आपने लेटेस्ट? अभी लेटेस्ट जबरिया जोड़ी करी ना. वेरी गुड. अभी और आने वाली हैं, और राइट. तो अपने लिंक्स भेजना ताकि हमारे यूट्यूब व्यूअर्स को पता चले आप कितने कौन सी करते हैं. आई नो वेरी वेल. 60-70 मेरे पास कोरियोग्राफर है एंड यू आर वन ऑफ द टॉप वन, राइट? ओके, फाइन. बस पीआर भी थोड़ा रहते रहो.
तो मेरी क्लिनिक, ये क्लिनिक आपने अनाजन कैसे चूज करी? मेरे को एक रिव्यू आया था इसका भी, तो मैंने बोला चलो हम लोग जाके ट्राई। कोरियोग्राफर्स में तो लाइन लगी हुई है सब। तो ऐसा बेसिकली काफी लोग यहीं से करा के गए, तो किसी ने बोला कि यहाँ पे बहुत अच्छा था, चलो ट्राई करते। बट यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा रिव्यू मिला और बहुत अच्छे नर्सेज है, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, बहुत मजा आ रहा है। मतलब अपना समझ के लोग ट्रीट करते हैं, कभी ऐसा सोचते नहीं कि कोई दूसरा है। बस आपसे डांसिंग सीखना है ताकि फिट हो जाए। ओके, गिव एंड टेक, रिवर्स कंसल्टेशन भी हम ले लेते हैं। मैरिज हो गई? नहीं। अच्छा भैया, एक ही चीज़ है तुम्हें पता है कि मैरिज कार्ड हम लोग रखते हैं, तो वो भेजना जरूरी है। 2024 करीब हो चुके हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।